अ, तो आज आज हमारे साथ है दयालु राम प्रभु जी, जो हमें पाठशाला के अंदर लेके जाएंगे। हम सब दयालु राम प्रभु जी को जानते ही है, फिर भी मैं संक्षिप्त में उनका इंट्रोडक्शन देता हूँ। दयालु राम प्रभु जी इस्कॉन चौपाटी से 20 से भी ज्यादा साल से जुड़े हुए हैं। और वो ये जो हमारे जो मंदिर में गोपाल फन स्कूल, संडे फन स्कूल है, उसके वो को फाउंडर है। उसके अलावा चिल्ड्रंस चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम, राधा गोपीनाथ चिल्ड्रंस कमिटी, इसके अंदर भी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हमेशा वो बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, और उनको देख के हमें भी प्रेरणा मिलती है। और उनका एक बिलीफ है इसमें कि हर बच्चा जो है वो एक यूनिक है, और हम उसके उसका हम ठीक तरह से उसको हम प्यार देंगे, उसको केयर करेंगे, तो हमारा ये एक समाज जो है, एक समाज जो हमारा है, वो अतिशय संवेदनशील और एक ऐसा समाज होगा जो सबके बारे में मान सम्मान करेगा और सबके बारे में केयर करेगा। तो ये उनकी बिलीफ है। और उसके हमने देखा है, उनको बहुत साल से हम उन्हें देख रहे हैं कि वो बच्चों के साथ इतना अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं, और खेल खेल में बच्चों को बहुत सारी चीज सिखा देते हैं। तो आज हमें भी उनकी पाठशाला में आने का मौका मिला है, और हम दयालु राम प्रभु जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सत्र में हमको प्रेरित कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू, धन्यवाद मोहन जोशी प्रभु फॉर योर काइंड वर्ड्स। मोहन जोशी प्रभु हमारे एडमिन हैं, सो अगर आपको बात करना है तो आपको उनको खुश रखना पड़ेगा, बिकॉज वही आपको अनम्यूट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद मोहन जोशी प्रभु। तो आज का विषय है कि क्लास के अंदर क्या होता है, और ये सिर्फ मैं ही नहीं आज ये विषय पे बात करूँगा। हमारे साथ और भी हमारे टीचर्स हैं, हमारे जो श्रेष्ठ टीचर्स में गिने जाते हैं, उनको हमने आज इनवाइट किया है। वो भी आएंगे, भाग लेंगे, और जब वो आएंगे मैं उनका परिचय भी करूँगा। सो क्लास के अंदर जाने के पहले हमें क्या करना चाहिए, उस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। अ, आज का एजेंडा क्या है, तो पहले हम चर्चा करेंगे कि अ, बच्चों के बारे में, कि उनका व्यवहार एट डिफरेंट एजेस एंड स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ कैसा होता है। फिर लेसन प्लान कैसा लगता है, कैसे बनाना चाहिए, क्या डालना चाहिए, उस पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर हम एक डेमो क्लास करेंगे 4 से 6 ईयर्स के बच्चों के लिए, और 6 और 8 साल के बच्चों के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपको एक अनुभव मिलेगा कि क्लास में बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं और उनको कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। सो ये एक्चुअली लाइव क्लास होगा। उसके बाद हम टीचर से बात करेंगे कि आपने क्यों किया जो किया आपने क्लास में, तो उस पर भी थोड़ा डिस्कशन होगा हमारा। और उसके बाद गुड बाय एंड हरे कृष्णा। तो इस क्लास में, इस प्रोग्राम में हम 2 टोपी पहनेंगे। हम आपको टोपी पहनाने को आए। हाँ, एक टोपी है स्टूडेंट की। तो जब हम क्लास ले रहे हैं 4 to 6 ईयर्स की, तो यू हैव टू वेयर द कैप ऑफ 4 to 6 ईयर्स। तो आपको वैसे व्यवहार करना पड़ेगा, आपको वैसे बात करना पड़ेगा। एंड प्लीज कीप योर कैमराज ऑन, बिकॉज टीचर्स वांट टू सी द चिल्ड्रन। हाँ, तो प्लीज कैमरा ऑन रखिए, पर्दे के पीछे मत बैठिए। वी वांट यू टू एक्ट like a child. So this will be like a real class. And then we will also have a demo class of 6 to 8 years. So आपके पास आज 3 टोपियाँ होगी, एक टीचर की और 2 स्टूडेंट की। तो अभी आप टीचर की टोपी पहनिए प्लीज। ओके, एवरीबडी वेयर द टीचर्स कैप, टीचर्स हैट। ओके, और अगर आप ये बच्चे को देखते हो, आपके क्लास में आया है बच्चा, आपके चैट बॉक्स में लिखिए इसका, इसकी उम्र क्या होगी। लेट अस सी वेदर यू आर एबल टू गेज द एज ऑफ दिस चाइल्ड। इन योर चैट बॉक्स टाइप द एज ऑफ दिस चाइल्ड।
Wow, this is perfect. So this child is around 4 years, but some people guessed it as 3, 4, 5. So very nice. Thank you. So you all are all experienced teachers, huh? अच्छा, इसका एज बताइए, इसका एज क्या होगा? Wonderful, 7, wonderful. 8, 6, 5, yes, around 6 years. Around 6 years. Okay. चल इसका बताइए, इसका क्या एज होगा? Yes, 9 years, 8 years, 10 years. So आपको एक अंदाज आ गया है कि बच्चे at different ages and stages of their life, how they look. Okay, let me take it behind. Okay. Uh, okay. See the difference. Yeah. See the difference how they grow up. तो आज हमारी चर्चा is about this child, this age group, 4 to 6 years and 6 to 8 years. उसके उसके आगे नहीं जाएंगे हम. Maybe that will be a separate class because you have to deal with them completely in a different way. So थोड़ा बताएंगे इन बच्चों के बारे में. These kids who are 4 to 6 years, जब वो क्लास में घुसते हैं, okay, they want their teacher to really love them, okay, hug them. Uh, they want a lot of love. तो अगर आप में बच्चों के लिए प्रेम है, if you have a lot of love for children, और आपके अंदर जो बच्चा है वो जागृत है, then this is the right age group for you to handle. It's a very difficult age group to handle. It's not very easy. A lot of प्रेम देना पड़ता है. आपका मूड खराब होगा, लेकिन जब आप क्लास में आओगे, you have to be full of energy, full of love for these children. So they need a lot of hug and they need a lot of love. ये बच्चे ऐसे होते हैं. अभी ये पिक्चर देख के बताइए कि ये कैसे होते हैं बच्चे. ये पिक्चर में ही हिंट है. आप बताइए, चैट में डालिए कि व्हाट डू यू थिंक किड्स आर लाइक एट दिस एज. राइट, 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 यू ऑल गॉट इट राइट. युगल माता जी, श्रुति माता जी, अनीता माता जी, यस, यस, दे आर लाइक अ स्पंज. ओके, जो भी टीचर बोलेगी दे विल एक्सेप्ट इट. ओके, जैसे स्पंज को हम पानी में डालते हैं, इट अब्सॉर्ब्स ऑल द वाटर. Whatever you tell them, they will absorb it. So it's a great time to tell them about Krishna, pastimes of Krishna. They will absorb it like sponge. और observe कैसे करते वो? Absorb कैसे करते? By observing. They use their eyes a lot because when they were born, they used to communicate with their mother and father using their eyes. आंखों के द्वारा. तो उनका प्राइमरी कम्युनिकेशन इज आईज. सो जब वो क्लास में भी एंटर करेंगे तो पहले देखेंगे टीचर को. नई साड़ी पहनी है. टीचर, टीचर साड़ी क्यों पहनी है आपने आज? आज जन्माष्टमी है ना बच्चा. ओके, इधर उधर घूमते रहते हैं, उनकी आंखें ऊपर इधर उधर सब जगह देखते रहते हैं. वेरी डिस्ट्रैक्टेड. अगर आपको उनको स्टोरी सुनाना है तो उनको स्टोरी दिखाना पड़ेगा. So we use a lot of flashcards to teach children of this age group. Yeah. But very distracted. आप आधा घंटा उनको एक स्टोरी सुना नहीं सकते, बिकॉज आधे घंटे में वो क्लासरूम से बाहर निकल के वो किधर और चले गए होंगे और शायद आपको पता ही नहीं पड़ेगा. So we have to do a lot of activities in the 60-75 minutes we are in the class. Okay, fast activities, right? And fun activities. Okay, उनको वो आते हैं क्लास में फिलॉसफी सुनने के लिए नहीं. जब वो क्लास से निकलेंगे उनको लगना चाहिए अरे वाह मजा आ गया. इसके लिए हमारे गुरु महाराज ने हमारे स्कूल का नाम गोपाल्स फन स्कूल रखा. Because kids should have a lot of fun. Krishna should be a lot of fun for them, and the teacher should also be a lot of fun for them. Yeah.
ये बच्चे ना अपनी दुनिया में भी रहते हैं। आप उनको कृष्णा के बारे में बता रहे हो, वो कुछ और सोचते होंगे। तो एक बच्चा है मेरी बिल्डिंग में, उसका नाम अब्राम है, मेरा दोस्त है, 5 साल का होगा। तो जब मैं नीचे जाता हूँ तो कभी वो मुझसे बात करता है, कभी वो बात नहीं करता है। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे क्यों करता है। तो बहुत मूडी होते हैं, कभी अपनी दुनिया में रहते हैं, तो आगे पीछे देखते नहीं है इतना। So there are chances that they are completely lost in the class or they're thinking of something else. They live in an imaginary world. So जब आप story उनको सुना रहे हो, they are imagining the story in their head. So they have a great power of imagination. And they ask a lot of questions. बहुत प्रश्न पूछेंगे. Teacher, uh, why sun is round? Why Krishna is blue? Okay. So they have a lot of questions. You have to have a lot of patience. We have to have a lot of patience to deal with these kids. Yeah. And yes, they like some gifts. So carry some stickers, some sweets. अगर कुछ अच्छा करेंगे तो give them. Yeah. Don't try to do too many group activities with them because it's very difficult for them to be in a group. Yeah. So that's our children between 4 and 6 years. मैं एक टीचर से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एज ग्रुप बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अगर आप क्लास में जाओगे, बोलेंगे आज मैं श्लोका सिखाऊंगी, और आप देखोगे कि बच्चे को नींद आ रही है, थक गए हैं, देन यू हैव टू चेंज द प्लान। सो यू हैव टू बी इन द मोमेंट विद दीज चिल्ड्रन। आपको देखना पड़ेगा कि बच्चों को क्या चाहिए, तो प्लान ए प्लान बी, प्लीज कैरी इट विथ यू। एंड वील हैव अ डेमोन्स्ट्रेशन बाय वन ऑफ आवर एक्सपर्ट टीचर्स कि हाउ टू इंस्पायर, engage, enliven children between the age group of 4 to 6 years. Now, quickly, I'm going to take you through the next age group. अभी बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं. Yeah, now they become 6 years, 7 years, 8 years. They become independent. अभी वो independent हो गए हैं. Okay, शायद खुद का लेस बांध सकते हैं, शर्ट का बटन लगा सकते हैं. So थोड़े, they have entered proper school now, right? फ्रेंड्स भी बनाते हैं क्लास में. ओके, सो जो छोटे बच्चे हैं वो इतने फ्रेंड्स शायद नहीं बनाएंगे, लेकिन दिस एज ग्रुप विल वैल्यू फ्रेंडशिप. मैं आ रही हूँ क्लास में बिकॉज सीता आ रही है, मैं आ रही हूँ क्लास में बिकॉज राघव आ रहा है. Okay, they really look forward to meeting their friends, so they start making good friends at this age. So a lot of group activities are very good at this age. उनका मकसद क्लास में रहने का, क्लास में आने का, अपार्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, इज द टीचर. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि फॉर अस द पर्पस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू सर्व कृष्णा, is to love Krishna. And to love Krishna is to serve Krishna. To serve Krishna is to please Krishna. हम बोलते हैं ना सब, वैसा उनका फिलॉसफी क्या है? My purpose is to love my teacher. My purpose is to serve my teacher. And my purpose is to please my teacher. वो चाहते हैं कि ये टीचर, मेरी टीचर is happy with me. So they will do many things to make you happy. Okay, they'll raise their hand, they'll answer the question, they'll help you, because they like to do that. They want your love. Yeah? Now, how does a teacher give love? Okay, the teacher gives love by giving recognition. बच्चों को नाम से बुलाइए. तो राघव, आप क्या कर रहे हो? कल क्या किया आपने राघव? सीता, आपने अच्छा ड्राइंग किया. नाम लेके बुलाइए बच्चों को. दे फील लव्ड. ओके, अप्रिशिएट द वर्क. अरे कितना अच्छा चित्र बनाया. दे फील वेरी गुड बिकॉज टीचर इज हैप्पी विद देम. उनको जिम्मेदारी दो. अच्छा राघव, अभी आप सब वर्कशीट्स डिस्ट्रीब्यूट करो. हाँ, टीचर ने मुझे सिलेक्ट किया. दे फील वेरी वेरी encouraged. Yeah, so this is their need. Give them recognition, give them responsibility in the class, and make them do group activities, because ये एज में थोड़ा डिसिप्लिन आ जाता है. दे लाइक टू बी विद फ्रेंड्स, एंड साथ में उनको एक्टिविटीज करने को अच्छा लगता है. लेकिन 4 to 6 years में अगर आपने ग्रुप एक्टिविटीज किया तो वो ग्रुप टूट जाएगा.
Okay, so this is a brief introduction about 4 to 6 and 6 to 8. अभी मुझे ये बताइए कि अगर आपको हमने क्लासरूम में इनवाइट किया, what is your favorite activity? What activity you want the teacher to do for you? What is your favorite activity? Put it in the chat box. Yes, put in the chat box. What is your favorite activity you want the teacher to do for you? आपका सबसे श्रेष्ठ favorite activity क्या होगा? Play games, story, yes, thank you. Games, coloring, painting, storytelling. Okay, a lot of people want stories and games. Nice. Craft, thank you. Thank you very much. Drama, okay, that's nice. So now, in a classroom, everybody has their favorite activities, right? Uh, हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का सीखने का स्टाइल अलग है, हर बच्चे के प्रेफरेंसेस अलग है, and we have to ensure that we have covered all kinds of activities in the, not in one class, maybe in one or two classes. सो ये 8 तरह के इंटेलिजेंसेस होते हैं जिसके द्वारा बच्चे सीखते हैं। पहला इंटेलिजेंस है नेचर स्मार्ट। तो बच्चे को अच्छा लगता है जानवरों के साथ खेलना, तो अगर आप जीवी जाएंगे तो गौशाला में लेके जाइए, तुलसी महारानी को क्लासरूम में लेके आइए, टॉक अबाउट पेट्स, so they like to learn by being outside with nature. Yes, so क्लास में ये एलिमेंट आना चाहिए एट सम पॉइंट इन टाइम। सेकेंड इज पीपल स्मार्ट। ओके, पीपल स्मार्ट आर ग्रुप एक्टिविटीज। ऐसे बच्चे हैं कि जिनको अच्छा लगता है कि बात करे, दोस्त बनाए, ग्रुप में काम करे। हमने देखा होगा, हमारा भी ऐसा ही नेचर होता है। कोई कोई लोग अच्छा लगता है उनको ग्रुप में काम करना, कोई कोई लोग को पसंद नहीं है ग्रुप में काम करना, उनको पसंद है कि वो अपने आप अकेले में काम करना प्रेफर करते हैं। नंबर स्मार्ट, ये लॉजिकल है, मतलब ऐसे भी बच्चे होते हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं बिकॉज उनके दिमाग में ये फिट नहीं हो रहा है कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। हनुमान जी ने इंडिया भारत से लंका में एक छलांग मारा, ऐसे कैसे हो सकता है? आपने पत्थर डाल दिया समुद्र में, वो कैसे फ्लोट हो रहा है? तो दे हैव क्वेश्चंस, दे हैव लॉजिकल, दे लाइक टू डिस्कस लॉजिकल थिंग्स। पिक्चर स्मार्ट, पिक्चर स्मार्ट, आप वीडियो बताइए, आप फ्लैश कार्ड बताइए, वो पिक्चर्स देख के सीखते हैं। फिर है हमारे सेल्फ स्मार्ट। ये बच्चे हैं जो पसंद करते हैं अकेले में रहना, थोड़ा सोचना, रिफ्लेक्ट करना, फिलोसोफर टाइप होते हैं थोड़े। तो अगर आप उनको एक बुक दे दोगे तो वो प्यार से आराम से वो बुक के साथ रह सकते हैं काफ़ी टाइम तक। So sometimes, yoga, meditation, chanting, they will like, because this is an activity which is very individual. Body smart, ये मतलब भागना, हाथ से कुछ बनाना, जैसे क्ले यूज करना, कटिंग, पेस्टिंग, उनको अच्छा लगता है ये सब करना। फूड, फायरलेस कुकिंग करना, लड्डू बनाना, सो दे लाइक टू यूज देयर हैंड्स एंड लेग्स। म्यूजिक स्मार्ट, कीर्तन हुआ, कोई भजन हुआ, they like to sing, they like to play the kartal, mridanga, so they have this music intelligence. And word smart, they like to hear new words। अगर आप कोई स्टोरी उनको सुना रहे हो, so they like to hear stories। So every child will have all these intelligences। हर बच्चे में ये आठों के इंटेलिजेंस है, बट उनके प्रेफरेंसेस अलग होते हैं। some kids like more of group activities, some kids like more of storytelling। जैसे मैंने आपको पूछा वैसे ही children also have their own preferences and bring this in the classroom। तो अभी हमने एक लेसन प्लान बनाया है for 4 to 6 years। ओके, और अगर आप देखेंगे ये लेसन प्लान में हम पहले बच्चों को वेलकम करेंगे और एक सर्कल टाइम होता है, बच्चे साथ में बैठेंगे, बात करेंगे, कल क्या किया, किधर गए, वार्म अप के लिए। उसके बाद एक्टिविटी होगी सफारी योगा 15 मिनट, उसके बाद 15 मिनट स्टोरी टाइम होगा, फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद हम नर्सरी राइम करेंगे, फिर उसके बाद, सॉरी आई कांट सी द स्क्रीन,
and then there's Prasad, and so there is some group, I think there's some play activity, and then Prasad in goodbye 5 minutes. तो अगर हम क्लास का प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग ऐसे होना चाहिए. The more we plan, the better it is, because इस एक्टिविटी में हमें क्या चाहिए, वर्कशीट चाहिए, मटेरियल चाहिए, साउंड सिस्टम चाहिए, ये सब प्रेपरेशन आसान हो जाता है जब we have a lesson plan. So now we will start the class, the demo class of children between 4 and 6 years, and for that we have a teacher from Netherlands. उसका नाम है सेलिन माता जी. सेलिन माता जी रहती है यूरोप में, विदेश में, लेकिन उनका दिल है हिंदुस्तानी. तो वो बच्चों को, छोटे बच्चों को योगा सिखाती है, छोटे बच्चों को फिलॉसफी सिखाती है. उन्होंने एक बुक भी लिखा है, डिवोशन ऑफ द हार्ट, जिसमें उन्होंने डिवोशनल पोएम्स लिखे हैं. So Mataji, we would like to have a copy of that, and we would like to use that in our classes also. Yeah, and I have seen, I've heard Mataji that when she talks to children, children get lost. They forget where they are. So I'm sure आपको भी उसका अनुभव होगा. माता जी हिंदी नहीं बात करती है, वो जर्मन बात करती है, डच बात करती है, अंग्रेजी बात करती है और संस्कृत बात करती है. तो हमने बोला कि चारों भाषा में से we will select English, because वो भाषा हमें समझ आती है. But don't worry, माता जी सिंपल इंग्लिश में बात करेगी, चिल्ड्रन इंग्लिश में बात करेगी, so we will all understand, and we will observe, and after that, after she finishes, we will have a discussion with Mataji. So over to you, Celine Mataji. Okay, thank you, Prabhu. Warm welcome to everyone. It's very good to see you and to get the opportunity to speak here. I'm very happy for this platform that we take time to convey this beautiful art of speaking to kids, because it's so important to already engage the kids and inspire them on a young age. So I'm very happy because I'm very passionate about this. I think it's good for the kids, teaching them amazing values that they will have for the rest of their lives with them. But also for us as teachers, I noticed that teaching to kids is much more challenging, maybe for our own ego as well, as teaching for grown-ups, because often we take ourselves very seriously. But when we teach for kids, we have to let go of all the masks, all the identities that we assign to ourselves, and completely be open to be there for the kids. So I noticed that it is a beautiful internal process that we go through as teachers, as well as the kids, of course, and it's a lot of fun. So today we will go through 3 activities together. Prabhu asked me to take some aspects, some activities from a course that we did a while ago. That course was called The Wild and Tame. So that was a course from Chowpatty Temple that was conducted about the animals in the Vedas. So we did a lot of games and activities and stories about all the animals of Mahabharata and the Vedic scriptures, which was very nice for the kids. So hopefully you will enjoy that today as well, and we can get the inner child out of ourselves too. So I don't know if everyone is able to unmute Prabhu, or maybe we use the chat box. We can do both. Oh, I cannot hear you yet. So, Mataji, you could just start with the story, and Okay. then if they have any questions, they'll raise their hands, and then we could unmute them. That would be good. Okay, good. You can use the chat box also. Yeah, thank you. Okay, we can use the chat box. Okay, because for kids, every activity, even if it's a story and you are telling, still you have to engage them constantly. So I will approach you now as if you were the student, so forgive me for that. I will share the screen. We made a PowerPoint that illustrates the story. Can you all see the PowerPoint? Mataji, I would like one of the participants to unmute and speak like a child, so that we know that they've understood what we want them to do.
So you can ask them a question and they will answer. Okay. 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 Yeah. And who will that be? Who is the victim? Select that person. Okay. Okay. Let Okay. them raise their hand. Yes. Or they can raise their hand. Okay. So let's start with our very first story of the day. As you see, we are at a, what is this place? Yes. So we see it is, you can use the chat box, huh? It is a farm. Yeah, garden. Yes, a garden. But in general, it is a farm. Exactly. So at this farm, there lived once upon a time a nice farmer. Oh, yes, there he is. A farmer. And his name was Kailash. He lived there with his sons and with his wife very peacefully. And he was also a very good devotee of the Lord. So one day he got a very amazing visitor. Ta-da! Who came? Who is this? You all know? Who is this sage? So the children are always very eager. Yes, Narad Muni, exactly. Narad Muni, we recognize him by his instrument, of course. So Narada Muni came on the order of the Lord and he said, "Oh, Kailash, I've got the order of Krishna to take you with me to Vaikuntha. We are going to the spiritual heavens. Please join me." And Kailash, he folded his hands. He was like, "Wow, oh, yeah, I want to come. But just not now. It's not a good time actually, because my sons, they are very young and I have to educate them still so they can work on the land and inherit my wealth. So, sorry, but I will come later with you. First, I have to do my duty here on earth." So Narad Muni was like, "Okay, then, okay, it's an amazing opportunity. Are you sure?" He was like, yes, I'm sorry. I have to stay here." Narada Muni was like, "Okay, it's your free will. You can stay." So what happened? Narada Muni, he disappeared. Okay. Yes, he disappeared. And many years passed by. Many nights, many years. And after that, Narada Muni, he came by because he can travel freely in the universe. He came again to the farm. So Narada Muni came there and he was looking. Where's Kailash? Where is he? And he didn't see anyone. But he saw someone barking very loudly, came up, and that was a little dog. And the little dog, he was saying, Narad Muni, don't you understand? It's me. I'm Kailash. Remember? All these years ago we met. And Narad Muni was like, oh my God, he degraded. Now he's a dog. So he said, "Even it's not too late, Kailash. I'm here. Come with me. We go to Vaikuntha together." But the dog, Kailash, said, no, I'm sorry. I can still not go because my sons, now they're grown up and they have the farm and the wealth in the house, but they're not taking care of it. So I have to stand at the door barking very loudly in order to keep all the thieves outside. So Narad Muni was like, oh, he still didn't learn. Okay, then let me go. And he disappeared. So again, many nights and days passed, many years. And after that, Narad Muni passed by the farm once more. And he thought, this is the last time. I'm going to try one more time to get him with me. So he was, whistling to get the dog. But nothing came. But he heard from a distance, he heard a sound. And an animal appeared in the greenery. Can you find him? Where the animal is? Say in the chat box which animal you find. Yes, snake, exactly. In the corner, he found a very big snake, a cobra. So this cobra, he came to Narad Muni, say, Narad Muni, it's me, I'm Kailash. Don't you remember? So Narad Muni said, oh no, this is getting worse and worse. He said, please, Kailash, it's your last opportunity. Come with me to Vaikuntha. But Kailash said, no, because yes, now they've taken care of the house, but no one is taking care of the fields. In the morning, my sons, they are sleeping all day. So I have to make sure that the elephants and the neighbors don't steal our grains.
So I'm here, to protect. And Narad Muni thought, oh, this is never going to happen with him. I have to teach him a lesson. So what did he do? He got the son of Kailash, and it was a farmer as well. Can we see him? Yes, there he is. He came running. He said, what's going on, Narad Muni? Wow. Yeah. And he said, okay, there's a very big snake. You have to go and kill him. It's dangerous for your children. So immediately the son ran towards the snake, and they came into a big fight. Unfortunately, the snake died. But on his last moments of his life, he remembered Narad Muni, because he came so many times, and he thought, I should have gone with him and enjoy eternal bliss in the Vaikuntha sky. But because he remembered Narad Muni at the end of his life, in the next life, he didn't become even another animal, but he became a devotee of the Lord. And then at last, he achieved Vaikuntha. So, a good ending, of course, always for the kids. Could you maybe write in the chat box, what is the moral of this story? So it's always good to ask kids, what did they learn from this? What did they learn? We should not forget God, the Lord. Yes, good. What else? Not postpone, yes, and delay. We are very good at that too. Think of the Lord, don't delay opportunity. Attachment, exactly. Pronounce attachment. Yes, material world. So often thank you all for the answers. Yes, good. Teacher, I pray every day. Wow, amazing. That's very good. You will go to Vaikuntha for sure. So, my sticker? Yes. So often what happens is that we say, don't postpone, don't have worldly attachment, don't focus on material things. But that kids, they cannot really grasp it yet. So you have to make it positive. You could tell them, for instance, we have to focus on what is really important in life. We have to choose what is important and give our energy to that. And then, second one, we have to focus on what is eternal, what is everlasting. And that is Krishna. So in that way, we can bring a story, make it very interactive, show them, different pictures, visual impulses, and give them a valuable lesson in life. So that is our story. And someone asked, what will children from 4 to 6 years say? Actually, they are very intelligent already. They are very keen and alert in answering. And I got many beautiful answers on this from already the youngest, because it's so easy to understand, with the pictures, that they can make the conclusions very easily. So that was our first story. Let's continue. Because with kids, when we speak and give classes to kids, it's not only listening. They have so much energy in their system, it needs to get out somewhere. So we don't let them sit all the time. We also give them an activity. So as Prabhu already announced, today we're going to go on a safari together. As we are speaking on animals, a safari is of course very nice to do. So I invite you to find some space behind you and to let the inner child out. So we're not going to sit still, but we're going to go on a physical safari together. So this is an activity that is very good for children between 4 and 6 years old because it's very interactive. They are full of energy. So in this way, they can channelize that energy, let it out. More of that is also that the brain, which they use to conceive these valuable lessons, the brain consumes the most oxygen of the whole body. So if we're sitting still, less oxygen is going there. But if we move, we recharge the brain so that again, they can concentrate and focus on the task at hand. So of course, we have to, go there. Let's see what is on the path. We're going to follow this path together. We're going to follow in the footsteps of, which animal is this? Maybe some more interpretations of a
Lion, yeah, lion. Crow, no. Yes, a lion or a tiger, exactly, yes. So let's see what is there. First of all, what we find, oh, yes, zooming in, we find in the distance a big, high in the sky, we see a big bird, but it's not just a bird. Which bird is this? What is the name of this bird? You can write in the chat box. He has beautiful decorations. It's the king of the birds. Garuda, exactly, yes, Garuda. And he's the carrier of Vishnu. So let's see, oh, yes, let's see if we can make a pose like a bird. So I'm taking you with me all the way to the back. You can find some space in your room. We have to move. That's what the kids do. So we go all the way to the back. We bend both knees. We take one leg, put it over the other leg. Yes, keep the balance. And then we spread our wings. Yes, and we're flying high over. Nice. Very far in the distance, we're flying over the wind. Nice. Good. Yes, let's change the leg. Check. Go to the other side. Balance on the leg. Find the balance. And then spreading the wings like big bird. Flying over. Nice. Yes, good. Feeling the wind. Good. Great. Applause for yourself. Nice. Let's see what other animals we can find here on the safari. So we go a little bit further, and what we see, big, strong elephant. Do you know which elephant is this? We recognize here in the distance, we see Garuda, which we just did. Yes, Gajendra, exactly. We recognize him because he's offering a lotus flower to Krishna. So, oh, yes. So let's see how we can make an elephant. What an elephant has is this big trunk, right? So let's take this big trunk above our heads. We spread our legs a little bit, and we're going to breathe deeply through that trunk, breathing deeply in. And on exhalation, bring your hands between the legs. Breathe deeply in and out. Deep in and out. Deep in and good. And give it a shake. Yes, that's the long trunk of the elephant. So this is very good for kids because in this way, they open the pranic energy lines in their body and the different nadis. So in that way, the brain gets recharged again with more oxygen and they can concentrate again strongly. So let's see what's there. We're not going to do all of them because it takes some time. But for instance, an example, what you can do with kids is, again, lion. Big lion. We know him as... Yes, Narashimadev. Good. We see little Prahlad there, and again a lotus flower. Good. So what kids like to do with this is to roar like a lion. Yes. So this to roar like a lion, it's a little bit stupid to do it alone right now in front of the computer, and the neighbors will be like, "Oh no, what is happening there?" But with kids, it's very fun to do. We can do it together. We can unmute everybody and we can row together. Oh, we can try. Yes, let's try it. Then we get the full experience. Let's row together. Yeah. Okay, great. Everyone awakened the inner lion. That's good.
Yes, so with kids, this is amazing to do because they think, finally, you know, we can let everything out. And in that way, they also open their throat chakra, which is the Vishuddhi chakra, which is there for surrender. More surrender and also creativity and personal expression. So this is really nice for them to do. Yeah, let's continue. What else do we have? Going on the path, and we see big cow. So then you can do the cat-cow position like this. But now we will go to the next one, to a very special one, a more special one. Because in the forest, in the jungle, we don't only have animals. What else do we find in the forest? You can write in the chat box. Nothing. Trees, yes. Trees and plants, exactly. Huge trees, small trees, nice flowers. Yes, river, mountains, caves. Wow, everyone's getting very creative. That's good. Yes. So we find trees. And what is the most important tree of the whole forest? The most sacred tree? Which one is it? Banana? No, another one. Another one? Yes, there it is. Tulsi Maharani, of course. Tulsi Maharani. Yes, nice. So let's see. The most special and sacred plant of the whole forest is, of course, Tulsi Maharani. So let's see if we can make Tulsi Maharani ourselves. Go and take the space. Yes, going to the back. Let's see how strong our roots are. So we plant one leg in the floor nicely, feeling up straight, going through the spine, placing one leg on the inside of your other leg. Breathing deeply in and bring the branches up. Nice, feeling strong and rooted down. Nice, Tulsi Maharani, Kijai. Good. Yes. See if you can make other branches, make some creative branches of Tulsi Maharani. Chak. Yes. Nice. And the other leg, feeling if the other root is equally strong. Yes. Good. Oh, nice. Good. So in this way, you get them quiet, because when they're in balance, they cannot focus on anything else but their balance. So in that way, you bring their attention back to the inside, to their middle line of their body. So that's really nice. Then we go to the very last one, because I think, yes, we finished the path. And wow, yeah, we found all the animals. But one animal escaped. Which animal escaped? Can you see? Yes, small animal escaped. Little bee. Yes, the honeybee, bumblebee. And this bee is not just a bee, because there was a very important Mataji who would always talk to the bee when she was missing Krishna. Who is this? Radharani, yes, Srimati Radharani. There she is talking to the bee. Exactly. So let's now also make that bee. We breathe deeply in, and on the exhalation, we make the sound of a bee, right? So breathing deeply in, on exhalation. Okay, closing the eyes. One more time, deep in. And last one, deep in. Good, great, nice. So this is the Brumry Breath, of course, from yoga, and it's very important to do with kids, because when you make this sound, the vibration of the sound will release nitric oxide in the bloodstream, which helps to open up the veins.
And when that happens, more blood can come through and therefore more nutrients throughout the body and also more oxygen for a whole system to get recharged and healed. So this is very nice to do with kids, and also it increases the concentration of them. Yes, so this is our safari yoga, how you can take children on a really nice journey and at the same time also engage them in the Vedic scriptures and give them a sense of the characters that are there, right? Okay, let's see. Check. Okay, we go already to one of the last activities because wait, can I go there? Wait. Yeah. Are we there? Is it this one? I think so. Yes, because these activities were, of course, for younger kids, but now we will also look at some activities for a little bit older kids. Okay. So what we can do with them is, for instance, a quiz. Because with all the kids, you want them to engage in the activities that show the abilities that they learned in school or that they recently learned. For instance, they're learning language, they learn to read, to write, they learn mathematics. So what you like to do with them is some problem solving. You want them to give them little puzzles and things so they can really, you know, get in there, and also to use their analytics, like the left side of the brain a little bit more, and also to make it a little bit into a competition because that is also good for them. So let's get a little bit competitive. Not with this one yet. This is a quiz, but later we're gonna get it. So here we have, I will make them black, otherwise you go too fast, some pictures. So of course, who is this? We know him. Yeah, we saw it already. We had a whole nice story about him. You can write in the chat. Yes, Narada Muni, that was too easy. Narada Muni, exactly. Then the next one, what is this? Yes. Is this the lotus? No. A little bit more specific. Yes, the symbol of ISKCON, the logo of ISKCON. Good. Yes, nice. Then this instrument. Yes, yes, there it is, the midranga. Yeah, nice. The drum, midranga, yeah. And then we have this, the plate with which we offer. How do we call that? Worship plate? No. Paraphernalia? No. Kashal? No. Panchprana? No. How do we call it? Yes, the arti plate. Exactly, the arti plate. Good. And then the very last one. Who is this? Who is this personality? Oh, at first, yeah, so fast. Nice. This is, of course, Indraji. Exactly. So what happens when we take all the first letters of these pictures? What happens? What do we get? Yes, the word N-I-M-A-I, Nimai. Exactly. So then it would be a nice introduction for instance, next week, we're going to speak about little Nimai. So Chaitanya Mahaprabhu when he was small. Great. So this is another one. Let us go to the final, because you're going so fast. We can do one more, I think. Do we have time, Prabhu? Yeah, Mataji, we can take this for sure. Okay, good. Then we just have to wait for my internet not to get too slow, hopefully. And then we can open a final one in which you will have to search for some things. Let's open it.
So these, you get an insight of all the PowerPoints that we have. We always use Prezi because these times we had a lot of online courses, and in this way we could still engage the children and give them nice visual impulses. So let's start the presentation and we go directly to our activity. So are there so far any questions? Maybe we can take them so that we wait. Yes. No one has any questions. So do we clearly see the difference between young kids and the little bit older kids? Yes. It seems like it's not really working. One moment, I will just try it once more. Yes, it's almost there. Yes. You've written a book on poems. Can you sing a poem for us? Oh, well, that's a little bit unexpected. I know that, but I got to know if it's possible in a child-friendly way, maybe just a few lines on Nimai. Oh, on Nimai. Yeah, we had a poem on Nimai and his little puppy, but I don't know by heart. Actually, maybe Radhika Kishori Mataji, she knows. Or not? Prabhuji, there is one hand raised. Play the song. We'll just play the song for till you get your internet in place. You just play the song for everyone. Yeah. Oh, you have it on digital, yeah? Yeah, we do have it. Oh, that's great. So Mataji, we also have one hand raised. So if you want to take the question, you can take the question. Okay, sure. Where is it? I cannot find it. Could you unmute that person, Prabhuji? Yeah. I just have a small question. Yes. I really liked your session. I would like to know where can I join your future sessions? Like, do you have you created any group for future links and you know the kind of presentations you shared? Can you share the source for the presentations and the future? I just randomly got this link through WhatsApp. So is that particular WhatsApp group you have made for sharing the links of such classes? Yeah, Mataji, we will put the invitation link on the chat box. So please join the group and you will get updates on future programs. Is that good, Mataji? Thank you. Oh, thank you. Thank you. Okay, so I finally got the internet back, so there we are. So this is also an activity for kids who are between the ages 6 and 8. So I all invite you to find as many sitas as you can in this small sheet. So tell me the number of the amount of sitas that you found. Sitas? How many sitas can you find? Yeah, 6 sitas, I see. Someone is bidding more. Yes, 6. So maybe we can unmute someone and we can find all the sitas here together. Or you can write in the chat box where you see the sitas in the first line, first row. Where do you see them? Because 6 is the right answer. You're way too quick. Actually, the kids are quite quick too. Yes. So, yes. So the first row we find here. Oh, that's a little bit white. Let me take another color. Yes. First row, we see Sita here. Exactly. Somewhere else. Second row, I saw. Exactly. Yes. The last column, yeah, here it is. Sita, 3 more. Where is she? Last row, exactly. 1 more, the very last. Oh, no, more. Yes, where do we find her?
Yeah, the last line. Oh, wait, now it's going fast suddenly. Yes, here, exactly. And you found her here. Good, diagonally up. Great. Do we have 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boom. I think it's good. We found all of them. Yes, great. Okay, now we have to find how many Rams are there. How many times can you find the word Ram here? Okay, let's go. Fast, fast, fast. Yes. Where do we see Lord Ram? Tell me. Silence. How many can you find? 4? No. Should be more. 2, 3. Ah, now it's getting harder, huh? Yes, where can we find Lord Ram? 5th row, diagonally down. Yes, here. Boom, Lord Ram. Where else can we find him? Last right corner, exactly. Here, going into the corner. Boom. Yes, more Lord Rams. Can you all see them? We need 6. 6 of them. Haha. Yes. Exactly here, diagonally. Yes. Which more? Again, diagonally left, going to the left. This one, I think. Yes, good. Now we have 1, 2, 3, 4. We need 2 more. 5th row, diagonally up. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, here. Great. Nice. 1 more. I don't know even if I see it myself. Oh, first column. Exactly. Here it is. Chaka. Boom. Okay, let's see if we got all of them. Yes, nice. That's correct. You're very fast. Good. So in this way, we help the children to use their skills of reading and writing, and immediately also they have to, look and try to be the fastest. And in this way, they get engaged in the activity. So these were all the activities that I wanted to share with you. Hopefully you feel inspired to bring this beautiful science also to kids, to teach them these eternal truths in a very fun and creative way. So yeah, thank you so much for having me very shortly here. And I hope you have a beautiful rest of the seminar today. Thank you. Thank you very much, Salim Mataji. I think some people have raised their hands. I think they might be having a question or so. Okay. Manojoshi Prabhu, any hands raised? Yeah, Rajeshwari Mataji has raised her hand. I have asked her to unmute. Okay. Hare Krishna Prabhuji, Hare Krishna Mataji. It's a very wonderful session. Really got inspired, and even I also feel like actually I was sitting on the table, sitting on the chair. Now I am walking and jumping after hearing your lecture. And my doubt is, till last December, I used to take 4 to 6 years children at my place, because I believe children face to face, I have to talk and like that. So I conducted and children were also happy. But now because of the situation, so I just stopped. I put the message, till the further notice, don't come to my home. I will not take the classes. Parents were little unhappy, but somehow I'm not taking the classes physically. But do you suggest, can we take the classes online for them? Yes, because so many online classes, I wanted them the personally, because jaise aapne kaha hai ki what you said is lots of masti we can do, and we can nicely games and all. So somehow online I'm feeling little uneasy. Can I continue? Shall I continue? What is your advice? Just I'm asking. Yeah, so exactly. I had the same doubts when I was first asked to do it in these Corona times. I think you have two options in this. Two options. The first one is to take smaller groups of kids, for instance, 2 at a time. But then it takes more energy for yourself because you have to conduct many sessions. But what I personally experience is by doing it online and trying to make it as interactive as possible, just as we did now. It's very fun for kids, and they were looking forward also to come, I heard from the parents. So we did a course of, I think, 6 weeks, and this was 45 minutes to 1 hour a week.
and they feel like, oh, you know, a game, or we're going to do something fun. And always when a computer screen is there, they are, oh. So in that sense, I think it's a very good option in these times to bring it online. But as a teacher, it takes more effort, because you have to constantly keep them engaged and use your voice and use your expression to keep them there in the here and now with you. So as a teacher, it's more challenging, but it also makes you very creative. So yes, I would definitely say that new times, they need new ways of finding connection. And internet connection is also a connection. So I think, yeah, I would recommend it. Prabhu, can we take one more question? Yeah, one more question. One last question we can take. Yeah. Rupali Mataji, can you please ask your question? Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. In that safari, while speaking about nursing day, you said something about the chakra. Can you please emphasize a little on that? Yes. So in Narsimha Dev, we had the lion pose, right? And in lion pose, normally you stick out your tongue, you open your eyes, and you're like, and you scream on the top of your lungs, the roaring sound of a lion. So in yoga, this is an asana that is used to open the throat. And the throat has, of course, the Vishuddhi chakra. And the Vishuddhi chakra is the chakra that is engaged with surrender. This is a very vulnerable place. And if we physically want to surrender, we do like this. So it's often said that surrender takes place physically in this spot. So when we open that for kids, that can be a surrender to their authentic self and to the higher, the connection with higher. So in that sense, this can really help also for shy kids to let them open up, you know, let them speak and be there with you. So in that sense, we open that Vishuddhi chakra. Yeah. Thank you so much. Thank you very much, Celine Mataji. So much of energy, so much of enthusiasm. We all were so involved, and it seemed so much fun. Thank you very much for joining us. Yes, we have a nursery rhyme we'd like to play. So because children like nursery rhymes. So Prakriti, can you play a nursery rhyme, please? Yes, sure. Mother said she had a boy and Nimai was his name. Oh, N-I-M-A-I, 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 and Nimai was his name. Oh, Mother said she had a boy and Nimai was his name. Oh, N-I-M-A-I, 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 and Nimai was his name. Oh, Mother said she had a boy and Nimai was his name. Oh, N-I-M-A-I, 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 and Nimai was his name. Oh, Mother said she had a boy and Nimai was his name. Oh, N-I-M-A-I, 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 and Nimai was his name. Oh, Mother said she had a boy and Nimai was his name. Oh, N-I-M-A-I, 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 and Nimai was his name. Oh, Mother said she had a boy and Nimai was his name. Oh, N-I-M-A-I, 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 and Nimai was his name. And
Thank you. Thank you. Thank you, Serene Mataji, for joining us and for all your support to make this class so engaging. Thank you for the opportunity, Prabhu. Thank you. So, did you see the intelligences being brought into the classroom? What type of intelligences we saw in the classroom? किस type के intelligences Mataji ने use किए classroom में? Can you just put in the chat box? Did we experience visual, music, word, logic, interpersonal, intrapersonal? Did we see all these kinds of activities in the classroom? So जितना हम creativity, जितना हम variety classroom में लेके आ सकते हैं, that much more engaging and fun it is for the children. So bring a lot of variety because children want variety. They become very restless. एक ही activity करना पड़ता है. Okay. We are now going to go to the senior children of us, which is 6 to 8 years. And हमारे साथ है हमारी माधुर्य लीला माता जी, जो एक expert teacher है. She is one of our श्रेष्ठ शिक्षक. बोलते हैं कि अगर आपको श्लोका बच्चों को श्लोका सिखाना है, yeah, so she can teach shlokas from newborn to people who are about to be reborn. मतलब वो सब एज ग्रुप्स को श्लोका सिखाती है. वो हमारी बोलते हैं टेम्पल की बिटिया है. टेम्पल में पली पौसी. थोड़ा टाइम वो विदेश में भी रह चुकी है. But she did not forget her roots. Her belief in our Indian culture. वो हम देख सकते हैं the way she has nurtured her child and the way she practices herself. Our Sanskriti in her eating, in her dressing, in her behavior. It's very, very inspiring. So please welcome our teacher for today, for the 6 to 8 years, Madhurya Leela Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Dayaluram Prabhu, for the very kind words. Aapka bahut dhanyawad. Do we do Hindi, English mix? I don't want Salim to get bored. अंग्रेजी सुन लिया अभी थोड़ा हमारी राष्ट्रभाषा मातृभाषा में ठीक है. So thank you all, and मुझे यहाँ आप सबके सामने बोलने में आप सबकी आज्ञा चाहिए. And जिस प्रकार से जब हम किसी भी कथाकार या कोई स्पीकर को सुनते हैं, उसके पहले उनका जो परिचय होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, राइट? जब भी आप कोई भी ग्रुप में या किधर भी आप जाते हैं, कोई कथा या कुछ बोलने के पहले उसका इंट्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है. दैट विल रेज द बार फॉर योर लर्निंग. सो एज अ श्लोका टीचर, भजन टीचर, संस्कृत वर्सेस, स्तोत्रम्स, अष्टकम्स, ये सब जब हम सिखाते हैं उसके पहले मैं 2 पॉइंट्स आपको शेयर करूंगी जो इंट्रोडक्शन के तौर पे, परिचय के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही साइंटिफिक भी है और हम ISKCON सर्कल में अगर इसे यूज करेंगे तब भी हम बहुत इसका फायदा ले सकते हैं. एक तो है एक अंग्रेज PhD डॉक्टर भारत में आया और उसने क्या सीखा और क्या देखा कि जो संस्कृत बच्चे बोलते हैं, जो श्लोक बोलते हैं, स्तोत्रम बोलते हैं, अष्टकम बोलते हैं, ऐसे 10-15 बच्चों को उन्हें एकत्रित किया और जो 10-15 बच्चे जो नहीं बोलते हैं अपने रोज के जीवन में संस्कृत, उसे एक तरफ रख दिया. अब दोनों टीम का उन्होंने CT स्कैन किया. जब CT स्कैन किया तो उनके दिमाग का जो फोटो निकला उसमें बहुत ही साफ तरीके से दिख रहा था कि जो ग्रुप रोज संस्कृत पाठ, श्लोक का पाठ, संस्कृत अष्टकम स्तोत्रम्स का जो रोज पाठ करते हैं बच्चे, उनका जो कॉग्निटिव एरिया है दिमाग में, जहाँ पे बुद्धि का बढ़ावा होना, उनका स्मरण शक्ति, उनका इंटेलिजेंस,
उनका जो रिस्पॉन्सिव जो होता है, क्विक रिस्पॉन्सिव थिंकिंग, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ था कंपेयर टू उस ग्रुप जो रोज संस्कृत पाठ नहीं करते हैं. इसको उस अंग्रेज ने संस्कृत इफेक्ट ऐसा नाम दिया है कि संस्कृत पढ़ने से रोज, चाहे आपका कंठस्थ हो या आप देख के पढ़ रहे हो, पर इस उच्चारण से दिमाग पर बहुत ही गहरा साइंटिफिक असर होता है, बच्चों पे खास करके. अच्छा, ये हो गई हमारी साइंस वाली इंट्रोडक्शन. अब हम हमारे जो भक्तगण के जो फिलॉसफी में उसमें आए, तो आप सब जानते हैं कथा गजेंद्र की. करेक्ट, आप सब जानते हैं गजेंद्र की कथा. जब गजेंद्र हाथी पानी में था, ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया और बहुत घमासान युद्ध हुआ और धीरे धीरे गजेंद्र पानी के अंदर डूबता गया. और तब उसे फिर क्या याद आया? उसने वहां पे अपना कोई बुक ढूंढा कि पानी में, अरे बुक खोल के मुझे भी श्लोका बोलना है या बुक खोल के मुझे कोई भजन गाना है. उसे अपने पूर्व जन्म से, जब वो इंद्रदुम्न महाराज थे, उस टाइम के बोले गए प्रार्थनाएं, स्तोत्र, स्तुति, श्लोक वो उन्हें याद थे क्योंकि वो कंठस्थ थे. और तब उन्होंने उन स्तुति पद को गाकर, भगवान को पुकारकर उनकी रक्षा हो पाई. तो अगर सोचिए, अगर वो गजेंद्र जी को और इंद्रदुम्न महाराज के टाइम पे अगर उन्हें नहीं याद होता कुछ भी श्लोक, क्या करते? डूब जाते हो. तो फिर कैसे बुलाते भगवान को? खैर, ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है दिखाने को कि कितनी महत्वपूर्ण बात है ये कि हम बच्चों को एज पेरेंट्स भी हम घर पे एक माहौल जैसा बनाए जहां हम रोज अलग 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 स्तोत्र, भजन, अष्टकम्स, गीता के श्लोक हो, चाहे भागवतम के श्लोक से, जो आपके मनपसंद. हमारे पास इतना वैरायटी है श्री प्रभुपाद की कृपा से कि आप जो चाहे लेकर उसमें आप शुरू कर सकते हैं. तो इस परिचय के साथ, इस इंट्रोडक्शन के साथ, हम अब एक सैंपल श्लोक लेंगे. और आप सभी तो बहुत विद्वान हैं ही, आप जानते ही हैं सब, पर बच्चों के साथ श्लोका जब करते हैं, और आज तक करीब मैंने गिनती नहीं किया है, बट हजारों बच्चों को श्लोका, ब्रह्म संहिता, बहुत सारे स्तोत्रम जैसे गोविंद दामोदर स्तोत्रम वगैरह, सब बड़े बड़े स्तोत्रम भी होते हैं. पर बच्चों का जो दिमाग है इतना सीमेंट जैसे होता है कि आप जितना डालोगे, आप जितने यंग एज से शुरू करोगे, आप बहुत अचंभित रह जाओगे कि इतना सारा कैसे गया अंदर. ये उम्र में अब जो हम 6 to 8 प्रभु जी बता रहे हैं, या 4 to 6 हो, या 10 तक हो, 15 तक हो, जो अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ है, उसमें हम जितना भरे, ये आपका इनपुट का टाइम है. वो बच्चा मीनिंग समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, उसके क्या, वो बाद में जब वो हो जाएगा 30, 40, 50 साल का, तब उसे सब समझ में आएगा. पहले इनपुट तो करें हम पहले अंदर तो डाले, फिर जब उसको जीवन और माया देवी से धक्का मिलेगा तब वो प्रोसेस होके अपने आप आउटपुट आ जाएगा. पर अगर इनपुट ही नहीं है तो वो उस समय बच्चा फिर गजेंद्र की तरह क्या याद करेगा? उसको पकड़ने के लिए कुछ चाहिए, नॉलेज, जो इस श्लोकास और स्तोत्रम्स, अष्टकम्स और गीत के द्वारा हम कर सकते हैं. तो अब हम एक श्लोक लेंगे, बहुत ही सिंपल श्लोक लेंगे, और मैं आपको बताऊंगी प्रोसेस. आप सब अपने अपने संडे स्कूल में सिखाते ही होंगे श्लोक, स्पेशली क्योंकि इसमें क्या है, मेरा एक जो नियम है जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं हर एक बच्चे को, चाहे वो ऑनलाइन जब मैं सिखा रही हूँ या जब मैं ऑफलाइन भी सिखाती थी, हर एक बच्चे को रिपीट करना है. ये ऐसा नहीं है कि मैं आगे आगे बैठ के बोल रही हूँ और आगे के 2-4 बच्चे गा रहे हैं और पीछे वाले बस सो रहे हैं.
हर एक बच्चे को क्लास के पहले ही बोला गया है कि भैया आपको एंड में ये लीड करना ही है। तो जब हम पहले लाइन से शुरू करते हैं, वो बच्चे को पता है कि मैं अभी से बराबर ध्यान दे दूं तो मैं पूरा श्लोक बोल पाऊंगा। और मेरा एक और एफर्ट रहता है कि 1 घंटे का सपोज एक क्लास हो, 10, 12, 20 बच्चे जितने भी हो, 1 घंटे के अंदर इतनी बार रेपिटेशन कराऊं कि उस 1 घंटे के अंदर ही उस बालक को वो श्लोक कंठस्थ हो जाता है। तो वो दिन भर अगर नहीं भी गाए, अगर नहीं भी किताब खोल के वापस रिवाइज करे, तब भी क्लास में इतना रेपिटेशन होने के वजह से उसे कंठस्थ हो जाता है। बहुत पेरेंट्स का ये फीडबैक भी मुझे मिलता है कि आपने इतनी बार रिपीट कराया है माता जी कि हम सुन के हमें याद हो गया ये, बिकॉज बच्चा दिन भर वही गा रहा है। तो इतने सारा रेपिटेशन करना, और कैसे करते हैं, कौन से पैटर्न्स है, कौन से फन वेज है, वो मैं आपसे थोड़ी बस आपको एक आइडिया दे दूंगी, आप कर सकोगे फिर। तो अभी आपको एक ग्लिम्स दिखाने के लिए मैं नंद कुमार जो मेरा बेटा है, तो वो 10 साल का, उसे बुलाती हूँ। तो वो थोड़ा एक बच्चे का रोल निभाएगा यहाँ पे कि मैं कैसे क्लास में से हरि बोल सबको हरि बोल नंद कुमार की तरफ से, कि कैसे अगर हम क्लास में भी बैठे हैं तो मैं अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है, सबको स्क्रीन दिख रहा है? ओके, ग्रेट। तो ये है क्योंकि आज का थीम प्राणियों एनिमल्स पे था, तो मैंने ये श्लोक का थोड़ा सिलेक्ट किया। पहली बात तो बच्चों को या सामने वालों को, अगर वो इंग्लिश पढ़ते हैं तो उन्हें बेसिक रूल्स जो डायलिटिक्स मार्क्स के हैं वो समझाइए। जैसे ए के ऊपर अगर डैश हो जाता है तो उसका आवाज कैसे होगा? आ, ठीक है, आ होएगा। और अगर एन के नीचे डॉट होगा, बिंदु होगा, तो वो ण, वो हो जाएगा, ब्राह्मणे ण हो जाएगा। ऐसे एस के ऊपर अगर डैश है तो श। सिंपल चीजें बच्चों को, क्योंकि अगर उसे नहीं पता हो तो उसे पढ़ने में आसानी होगी। हमेशा सोचिए कि सामने वाले बच्चे को दिक्कत ना हो, उसे कैसे समझ में आए। बहुत ही सिंपलिस्टिक स्टाइल से शुरू करना है। बहुत ओवरवेलमिंग में बहुत ज्यादा उसे टेंशन नहीं हो जाए कि अरे बाप रे इतना मुश्किल सा संस्कृत है, ये तो मेरे से नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं। हम अब इस श्लोक को तोड़ तोड़ के, जैसे बच्चों को तोड़ तोड़ के रोटी खिलाते ना, एकदम जो बड़ा बच्चा होता तो फिर भी आधा रोटी खा लेगा एक से, छोटे बच्चे को छोटा बाइट और बड़े बच्चों को फिर उसके साइज के हिसाब से जो बाइट। तो अब हम इस लाइन को स्मॉल स्मॉल पीसेस में तोड़ेंगे। आपके स्क्रीन के सामने है, तो हम रिपीट करेंगे। ओके नंद कुमार, रेडी? तो पहला लाइन का पहला शब्द विद्या। विद्या। ऐसे रिपीट कराना, एक एक वर्ड। विद्या, 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 विद्या। अब हम दूसरे शब्द पे जाएं। कोई प्रॉब्लम हुआ इस वर्ड में? एनी प्रॉब्लम, कंफ्यूजन? नो, वेरी गुड। आगे विनय, 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 विनय। पेरेंट्स अगर आप भी थोड़ा ट्रायल लेना चाहे तो प्लीज डू रिपीट। विद्या, विद्या, विनय, विनय, विद्या, विद्या, विनय, विनय, विद्या, विनय, विद्या, विनय। संपन्ने, 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 संपन्ने। विद्या, विनय, संपन्ने। विद्या, विनय, संपन्ने। अभी पूरी लाइन कहेंगे। ओके, विद्या, विनय, संपन्ने, विद्या, विनय, संपन्ने। अब आंख बंद करके, इतने बार हमने कहा है, चलो ट्राई करते हैं। आंख बंद करो। विद्या, विनय, संपन्ने, बोलो। विद्या, विनय, संपन्ने। जब आंख बंद करते तो श्रुति, जो अपने श्रवण करने की शक्ति है, वो बढ़ जाती है। हाँ, तो अगर आप आंख बंद करेंगे, पहले देखिए, जब नहीं आता है तब देखिए। जब आप आंख बंद करेंगे वो श्लोक आपके आंखों के सामने भी आएगा और आपको जो सुनने की शक्ति है वो बढ़ जाएगी।
विद्या विनय संपन्ने। विद्या विनय संपन्ने। अभी दूसरे लाइन, ब्राह्मणे। ब्राह्मणे। देखिए वापस तोड़ेंगे, अगर आपको लगता है कि बच्चे को थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है तो उसे तोड़िए। ब्राह्मणे। मणे। ब्राह्मणे। मणे। ब्राह्मणे। ब्राह्मणे। गवि। गवि। हस्तिनी। हस्तिनी। गवि हस्तिनी। गवि हस्तिनी। ब्राह्मणे। ब्राह्मणे। गवि हस्तिनी। गवि हस्तिनी। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। ठीक है, अभी हमने पहला और दूसरा लाइन जैसे किया, अभी यहाँ पे थोड़ा रुक कर बच्चों को समझाएंगे कि हमने क्या बोला है। तो प्रभुपाद जी ने देखिए कितनी मेहनत की है, हर एक वर्ड का हमारे पास उसका अनुवाद है। विद्या मतलब विथ एजुकेशन। अभी आप समझेंगे कि सही विद्या क्या है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण सही विद्या क्या है वो बता रहे हैं। तो विद्या विथ एजुकेशन। विनय, विनय जो बहुत ही विनम्र भाव से रहता है उसे यहाँ पे विनय कहा है। विद्या विनय संपन्ने मतलब भरा हुआ, जिसमें बहुत सारा गुण भरे हुए हैं। ब्राह्मणे, ब्राह्मणे मतलब यहाँ ब्राह्मण, ठीक है। और गवि, गवि मतलब गाय माता, गवि इज अ काउ, गाय माता। हस्तिनी हाथी, हमने देखा ना अभी प्रीवियस पीपीटी में गाय भी थी, हाथी भी थे, सारे फोटोज में तो सब देखे हमने। अभी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं विद्या मतलब अपनी विद्या, विनय बहुत विनम्रता, संपन्ने भरे हुए, ब्राह्मणे जो ब्राह्मण होते हैं, गवि मतलब गाय माता, और हस्तिनी हाथी। अब हम दो लाइन साथ में जो अभी हमने रिपीट किया इतने बार, उसके अभी मीनिंग्स भी आ गए, हम उसे वापस वो दोहराएंगे कि 5-6 बार दोहराते दोहराते दूसरे बच्चे को कहेंगे चलो बेटा अभी आप बोलो फर्स्ट लाइन, और फिर पूरी क्लास रिपीट करेगी। वो फर्स्ट लाइन कहेगा, आप लीड करो फर्स्ट लाइन, चलो। विद्या विनय संपन्ने। अभी सब रिपीट करेंगे। विद्या विनय संपन्ने। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। अभी दूसरा बच्चा वापस वही 2 लाइन बोलेगा और हम रिपीट करेंगे, फिर तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, इस प्रकार से। हमारे क्लास में काफी बच्चे हैं। अच्छा, आप पूछ सकते हो किसको बनना है यहाँ पे श्लोका सैंपल बच्चे? हु वांट्स टू डू इट विथ मी? ओके, तारा वांट्स टू डू इट। I can see one kid here. Can you unmute her? Tara, आपका वीडियो ऑन कर लीजिए अगर आपके बच्चे साथ में हो तो। लेट्स डू दिस। अनम्यूट करो। हाँ, आपको रिक्वेस्ट भेजा गया है। ओके, यस। विद्या विनय संपन्ने। अभी हम रिपीट करेंगे। विद्या विनय संपन्ने, बोलो। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। वेरी गुड, थैंक यू। हु एल्स इज डूइंग द नेक्स्ट फर्स्ट 2 लाइन्स? और कौन है? हमारे बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, मीडियम बच्चे, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉल, whoever wants. Please unmute. I think Deepa Patil Mataji, whosoever. विनय संपन्ने। विद्या विनय संपन्ने। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। वेरी गुड, वेरी नाइस। और कौन करना चाहेगा पहले 2 लाइन? प्लीज अनम्यूट। श्रुति जी। विद्या विनय संपन्ने। विद्या विनय संपन्ने।
ब्राह्मणे गविहस्तिनि। ब्राह्मणे गविहस्तिनि। वेरी नाइस, थैंक यू। अभी मैं एक काम करती हूँ, जस्ट सो दैट यू सी कि हमने इतने बार रिपीट करने के बाद अगर हम कर सकते हैं तो ये करेंगे। How do I not? I will remove this. Close it. Yeah. हरे कृष्णा, दंडवत हाँ। प्रणाम माता जी। मेरा एक क्वेश्चन था, अच्छा, जब हम श्लोक सिखाते हैं तब उसका भाषांतर उनको बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए बच्चों को? उनको जो ट्रांसलेशन होता है ना, पूरा जो एंड में आता है, वो सिखाना बहुत जरूरी है। मैं अभी आपको कराने वाली थी, ये श्लोक के बाद मैंने अभी स्क्रीन बंद किया ताकि थोड़ा ट्राई करते हैं, जैसे हमने अभी इतने बार रिपीट किया कि हम याद कर सकते हैं कि नहीं। जिसको ये श्लोक नहीं आता हो वो हैंड ऊपर कीजिए, तो हम ट्राई करते हैं कि आ गया कि नहीं। ओके, अदिति जी, सिर्फ 2 लाइन मीनिंग के साथ। देखो हमने पढ़ा विद्या, एक बार सुन लीजिए अगर नहीं याद है तो। विद्या विनय संपन्ने, जो विद्या से भरपूर और विनय से संपन्न है, ऐसे ब्राह्मण। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे। गवि इज व्हाट? काउ। हस्तिनी इज एलिफेंट। थोड़ा सा एक्शन वैक्शन करके भी याद कर सकते हैं। सो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। चलो ये 2 लाइन कौन बोलेगा बिना देखे? अदिति जी, आपका अनम्यूट किया है। हाँ। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। वेरी गुड, सुपर। बैठे बैठे 2 लाइन हो गए याद, फैंटास्टिक। ममता जी वाराणसी से, आप कहिए 2 लाइन। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। सुपर। देखिए अभी याद हो गया, तो जो माताएं हैं या जो प्रभु है घर पे अपने अन्य कार्य करते समय ये गा सकते हैं। जब कंठस्थ हो जाता है तब किचन में काम करते हुए, बच्चों को सुलाते हुए, यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते समय आप उठ के ये श्लोक चाहे जितने भी कंठस्थ हो आप याद करके बोल सकते। बहुत ही फायदेमंद होगा सब परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए। तो इस प्रकार से should I continue the full verse or do we have question answers? I don't know. Dayaluram Prabhu? Your voice, your mic is off, Prabhu. माता जी कंप्लीट कर लेते हैं वर्स, Okay. लेकिन थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। Okay, fine. Okay, so just as we did first 2 lines, हम 3rd और 4th लाइन करेंगे, ठीक है? तो you have to repeat after me, नंद कुमार। शुनी 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 शुनी। देखिए अगर आप इंग्लिश वाला देख रहे हैं तो एस के ऊपर जब स्लैंटिंग डैश होता है तो वो श हो जाता है। शुनी 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 चैव 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 शुनी चैव शुनी चैव श्व 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 पाके पाके च च श्व पाके च श्व पाके च शुनी चैव शुनी चैव श्व पाके च श्व पाके च पंडिताः 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 समदर्शिनः समदर्शिनः शुनी चैव श्वपाके च शुनी चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। पंडिताः समदर्शिनः। अब शुनी का मतलब क्या है? शुनी का मतलब है डॉग, ठीक है? the animal dog. Ch Eva is and certainly. Cha and Eva, chaiva and certainly, surely, जरूर. श्व पाके मतलब श्व को पकाने वाला, जो कुत्ते को भी पकाकर खाए, ऐसा चांडाल, ऐसा आउटकास्ट, दैट इज श्व पाके। शुनी चैव श्वपाके च शुनी चैव श्वपाके च पंडिताः। पंडिता किसे कहते हैं? पंडिता ये डेफिनेशन है, जो इन सभी को एक समान
देख सकता हो. समदर्शिनः. पंडित कौन है? जो इन सबको मतलब एक बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ता और एक कुत्ता खाने वाले व्यक्ति को भी समदर्शिनः, इक्वल विजन, नॉन जजमेंटल, राइट? समदर्शिनः, इसे कहते हैं पंडित. तो अभी हम चारों लाइन करेंगे. ओके, क्विकली लेट्स ट्राई. एक बार देख के सब लोग ध्यान से देखिएगा, देन वील डू इट विदाउट सेइंग. लेट्स ट्राई. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः. इसके बाद जब बच्चों को बहुत बार अभी आप लीड करो, अभी आप लीड करो, अभी आप लीड करो, एंड लीड फॉलो, तो सारे बच्चे जब इन्वॉल्व हो जाते हैं वो वहीं का वहीं सीख लेते हैं. वर्ड टू वर्ड तो साथ में हो ही गया. फिर उन्हें हम जो ट्रांसलेशन है, द हम्बल सेजेस बाय वर्च्यू ऑफ ट्रू नॉलेज, ये भी उन्हें रिपीट कराना है, बिकॉज श्लोका के साथ ट्रांसलेशन भी मेमोरी में इनपुट होना चाहिए. The humble sages, by virtue of true knowledge, see with equal vision a learned and gentle brahmana. अभी यहाँ पे आप टोन से पॉज करा सकते. A learned and gentle brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater. और फिर जब ज्यादा बड़े बच्चे हैं, then there is a lot of discussion on you can discuss on equality and क्यों इस पंडित को सब सेम दिख रहे हैं, क्योंकि वे शरीर को नहीं देख रहे हैं, उनके अंदर के आत्मा को देख रहे हैं. So lot of discussions can happen. एक श्लोक को लेके बहुत इंटरैक्टिव बना सकते हैं, उनका राय मांग सकते हैं और अपने जीवन में कैसे हम इसे उतारे. ठीक है, हम आपको एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप कुत्ता और ब्राह्मण को आज ही समदर्शना देख सके, पर एटलीस्ट आप अपने ही जो ह्यूमन कैटेगरी के लोग से इंटरैक्ट करते हैं, उन्हें हम कैसे इक्वली ट्रीट करें, कैसे हम उन्हें अच्छे से हमारा बर्ताव हो. बहुत सारी चीजें ऐसे बच्चों के साथ डिस्कस की जाती है. So with that, I will open it up for question answers if there are any. Yeah, you can raise your hand and Mataji will answer your question. Yes. Oops, how do I get to? हाँ, Dipti ji. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. I'm from Pune, Mataji. If you remember, we had met. ओके माता जी, आई जस्ट वांट टू आस्क, मुझे पूछना है कि ये श्लोका रिसाइटेशन जो होता है उसमें आपने बोला कि एस, जब एस के ऊपर डैश होता है तो वो श हो जाता है. तो ये एज अ टीचर इवन वी आर सेल्फ आर लर्निंग, बट व्हेन वी आर टीचिंग वी आल्सो माइट मेक सम मिस्टेक्स. लाइक अभी मैंने आपका देख के ही मुझे रियलाइज हुआ कि आई यूज्ड टू से समदर्शन ना ह, आई नेवर यूज्ड टू से समदर्शन न, यू नो, बिकॉज़ ए डजंट हैव अ डैश. सो इफ वी डू दोस मिस्टेक्स, इज इट अ बिग aparad, something like that, you know? I don't think it's a very big aparad. It's okay, we all are learning. But another thing that you can do is you can do a little practice before you go out to teach. You know, a little self revision, or, you know, because when you're teaching, you have to really be out there, you know, with the kids. Your brain has to be already with them. But प्रेप अगर थोड़ा कर सकते हैं ना, तो थोड़ा ध्यान से, अभी जो हमें पता ही चला है इस रूल्स के बारे में. लाइक मैं कोई संस्कृत पंडित नहीं हूँ. आई हैव नेवर लर्नड इट एज अ लैंग्वेज, राइट? व्हाटएवर संस्कृत आई हैव लर्नड फ्रॉम माय चाइल्डहुड इज दीस श्लोकास लिविंग इन द टेंपल, जस्ट बाय हियरिंग, जस्ट बाय रेपिटेटिव हियरिंग. तो आई मीन आई एम डिस्क्लेमर कि भाई मैं संस्कृत पंडित, ग्रामेटिकल ये वो मुझे नहीं आता. हम सिर्फ रिपीट कर रहे हैं प्रभुपाद जी के किताबों से देख के, पढ़ के. तो थोड़ा प्रेप कर सके तो इट इज नाइस, यू नो, सो दैट चिल्ड्रन कैन आल्सो लर्न इट द राइट वे. फॉर बिकॉज क्या अनलर्न करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. स्पेशली एक बार वो बैठ गया ना जबान पे, तो उसे अनलर्न करना, उल्टा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो फॉर चिल्ड्रन, इफ दे लर्न इट द राइट वे फर्स्ट ऑफ, इट्स रियली गुड. इट्स रियली गुड. या, थैंक यू. Hare Krishna Mataji, am I audible? Yes, yes.
Okay, Hare Krishna. So thank you so much, Mataji. Very interesting how you also teach the synonyms and then the translation. So my question is, Mataji, because different children have, different levels, right? Some children pick it up after 2 times. Some child picks up after 4, 5 times, like that. So, how do we maintain the attention span of all the kids, especially say there are around 10 children are there? Because the child who's picked up already the first 2 lines and the 4, 5 times is already feeling bored, what I do is with such kids, I tell them to now teach. Suppose if there's a physical class and I break them up into groups of 2s, pair them up. If you can gauge, this guy already knows it, this guy doesn't know. You pair them up together, and then you tell them, now you take it up. You take up his, you take up his. You pair them up and you transfer that energy from the guy who knows a lot to the one who doesn't, and then help him come up. So that they both come up on the same, speed or whatever. You break them up into, in groups, and then you switch partners and say, now come on, now you let's switch partners, and then now you take up his, and, let her take up hers, and like that. So then they are engaged in a more better way together. Okay, in the Zoom sessions, how do you do that, Mataji? Because it takes a lot of time, and now almost all the sessions are happening on Zoom. So for me, my Zoom, my cap is, first of all, you have the same age group kids. And secondly, this generally happens when you have a very vast age difference. When you have a 4-year-old and an 8-year-old, then the 8-year-old will pick it up faster, suppose, than the 4-year-old. Some are shy, some are introverts, some are extroverts. So on Zoom, I have, first of all, the same age group. And then there are breakout rooms if you want to, if the kids are equipped enough to handle breakout rooms, you can send them there. Or you can just have each kid repeat once. If there are smaller number, I have them repeat more times. But if there's, if you think the attention span is not very great, then एक बार ही सब अगर बोलेंगे तो उतने में वो सबका याद हो जाता है. Fine, okay. Because I also do not know the breakout rooms and all that, some things we are on ourselves, I learned from him. Okay, thank you, Mataji. Hare Krishna, thank you. Any other questions? No, I think we're very, very good set of teachers here, Prabhu. They're all great to go. Thank you. Fabulous. No, thank you. You are my first yoga teacher. No. Thank you all. So, आपका जो conviction है ना हमारे संस्कृति में, I think वो हम देखते हैं आपके recitation में. आपका जो conviction, जिस तरीके से आप श्लोका बोलते हो और सिखाते हो, shows your belief, and that transfers, बच्चों में वो transfer होता है. हाँ, अरे ये घर संस्कृति है संस्कृत से. तो जब संस्कृत करते हैं, पढ़ते हैं, अगर संस्कृति चाहिए तो संस्कृत को थोड़ा अपनाना पड़ेगा. बहुत सुंदर भाषा है. एंड उससे हमारा जो हम खुद स्वयं कथाएं सुनते हैं, करते, हम कितना कुछ समझ सकते हैं उसके द्वारा. इतना ज्यादा घर का एक आपका माहौल बन जाएगा कि हमें रोज, चलो इस महीने हम रोज गोविंद दामोदर स्तोत्रम पाठ करेंगे जिसमें 71 श्लोक है. चलिए इस महीने हम ब्रह्म संहिता करेंगे, 40 श्लोक है. इसमें हम इस बार हम 12वां अध्याय करेंगे. इस बार हम, कितना कुछ है साथ में बैठ के करने के लिए. भगवान के सामने जब हम मंदिर भी जाते हैं, हम दर्शन करते हैं, फिर हम प्रार्थना करते हैं, और फिर हमें स्तुति करनी है भगवान की, तो वहां खड़े खड़े हम क्या गाएंगे? हमको तो खुद के तो श्लोक बनाने आते नहीं है. तो हमें अगर जगन्नाथ मंदिर जाके जगन्नाथ अष्टकम अगर कंठस्थ हो तो हम जगन्नाथ अष्टकम गा सकते हैं भगवान के आगे. देखिए आप लोग सब दामोदर अष्टकम तो करते ही हो कार्तिक में, राइट? दामोदर अष्टकम करते हैं. वैसे इतने सारे कृष्णाष्टकम, नंदनंदन अष्टकम, श्री राधा रानी के बारे में, जगन्नाथ अष्टकम, नामाष्टकम, मधुराष्टकम, इतने सारे हैं कि हमारा जीवन कम पड़ जाएगा इतने सारे सीखने के लिए. इधर वी हैव सो मच, so please start somewhere, कहीं ना कहीं, and the journey will take you very, very deep. Thank you. Chat box में एक सवाल है. Chat box में many times kids doesn't show any interest to learn shloka, like 4-year-old.
how to make it interesting. तो ये कैसा interesting किया जाए? Do not force it on them. If they are not interested, don't teach them. मैं बताती हूँ, मैंने नंद कुमार को जब वो 1.5-2 साल का था तब से जो भी गाते हैं घर पे, तो उसको वो लास्ट लाइंस आने लगे थे जब वो आई थिंक 2-2.5 का था, तब दामोदराष्टकम, संसार दावा, सारे प्रेयर्स, मॉर्निंग प्रेयर्स। फिर एक टाइम आया, उसने मुझे बोला, आई थिंक 4-4.5 का था, हम लोग ने 5वें अध्याय गीता तक पहुंच गए थे, और तब उसने कहा मम्मा मुझे नहीं सीखना है, मैंने बंद कर दिया। देखिए, उसे जिसमें इंटरेस्ट है उसमें फोकस करना ज्यादा बेटर है, या तो अगर उल्टे बकेट के ऊपर पानी डालोगे वो नहीं जाने वाला अंदर। डोंट वेस्ट योर टाइम, डू स्टफ दैट दे आर इंटरेस्टेड इन। फिर जब उसने आपस में अपने आप से आके कहा कि मम्मा मुझे अभी ना सीखना है, 2-3 साल हमने बंद कर दिए थे श्लोका घर पे, मैं उसको ना सिखा, मैं अपना जो रोज का पाठ करना, गाना, ये आरती वगैरह सब करना वो कर रहे थे, पर इसके साथ बैठ के जो सिखाना या करना था वो मैंने इसके इच्छा के अनुसार, जब बकेट सीधा होगा तब हम पानी डालेंगे ना, बकेट उल्टा होगा तो हम व्हाई डू यू वांट टू इवन वेस्ट योर एनर्जी। तो this is my personal opinion, you can try and see what works for each one, but that is my personal opinion. Thank you, धन्यवाद। Thank you so much. Thank you। जैसे माता जी बोल रही थी कि अगर आपको आते हैं आप बोलते रहिए, बच्चे सुनते रहेंगे और ये इनडायरेक्टली सीखते रहेंगे। सो ये कैजुअली भी सीखते हैं। जैसे नरसिंह आरती का बच्चों ने सब सुन के ही सीखे हैं। सो इन दिस वे दे कैन लर्न, सो वी कैन लीड बाय एग्जांपल। थैंक यू माधुरी माता जी for thank you all so much. Hare Krishna. So now for the last part we have with us Surbi Mata ji. सुरभि माता जी हमारी एक श्रेष्ठ शिक्षक है, टीचर है। उनके भी 2 बच्चे हैं, चैतन्य और अनन्या। चैतन्य 5 साल का है और अनन्या 7 साल की है, और वो हमारी संस्कृत की पंडितायन है। वो बच्चों को संस्कृत सिखाती है। उसके सिवा बच्चों को कहानियाँ भी सुनाती है, ड्रामा भी करती है उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जब भी हम कोई प्रोग्राम आयोजन करते हैं बच्चों का, जीवी में, मंदिर में, वो हर वक्त आती है। most of the time I've seen her, she is there. That shows her love for her children and for children in general. So very happy to have Subhi Mata ji with us. And Mata ji हमें एक कहानी सुनाएगी। This is for 6 to 8 years because हमको आपको वो विषय दिखाना है कि जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको हम कैसे कहानी सुना सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप सभी वैष्णव जनों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज बच्चों को कहानी सुनाने के माध्यम से हम बहुत कुछ कृष्ण के बारे में, उनके गुणों के बारे में, भगवान से उनको करीब लाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और सभी बच्चों को, वॉट एवर एज ग्रुप इट इज, सभी बच्चों को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो क्या रहता है, जैसे 4 से 6, डायरेक्टली मैं पॉइंट पे ही आ जाती हूँ, अपन स्टोरी ही स्टार्ट करते हैं। तो एक बात मैं बताना चाहूंगी, जैसे जो 4 to 6 इयर्स का एज ग्रुप होता है, उसमें आप कोई भी उनको रिपीट भी सुनाएंगे तो वो लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ में सुनेंगे। रिपीटेशन भी अगर आप करेंगे उनके साथ में, और पर अगर आप 6 से 8 साल की उम्र के बच्चों के साथ में ये करेंगे तो सबसे पहले कुछ बच्चे जरूर बोलेंगे ये तो हमने सुना हुआ है, ये कहानी तो हमको आती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि कुछ ना कुछ कहानी में डीप एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि अपने स्क्रिप्चर्स ऑलरेडी इतने डीप हैं, उनमें इतनी गहराई है कि कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे अपने को प्रिपेयर करके रखने चाहिए जो डेफिनेटली उन बच्चों को नहीं पता हो और जो उनके लिए नया हो। तो इसके लिए पहले से थोड़ी अपने को डीप स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे आज मैं एक स्टोरी लेने वाली हूँ कालिया नाग की। तो ज्यादा करके सभी बच्चों ने जैसे ये सुनी हुई होती है, बट इसमें 2-3 बातें ऐसी हैं कि जब अपन उनको बोल सकते हैं, वो जैसे ही ये बोलते तो अपन उनको कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, कुछ ऐसा है इसमें, मुझे ये आप बताना सुनने के बाद में कि आपको क्या नया इसमें सीखने मिला। तो जैसे कहानी स्टार्ट करते हैं, वैसे आप सब ये जानते ही होंगे। तो ऐसे शुरू करेंगे। एक बार कृष्ण अपने सभी ग्वाल बालों के साथ यमुना के किनारे पे खेल रहे थे, बॉल से खेल रहे थे।
खेलते खेलते उनकी बॉल यमुना नदी में गिर जाती है। अब उस समय यमुना नदी में एक बहुत ही जहरीला सांप रहता है जिसका नाम होता है कालिया नाग। और उसकी वजह से वहां पे कोई भी गाय, पशु, पक्षी, वहां के जो वृंदावन के लोग थे, कोई भी उस पानी को नहीं पी पा रहे होते हैं। तो अब सब डर जाते हैं कि कैसे इस बॉल को लेकर, कौन बॉल को लेकर आएगा, क्योंकि उनको चाहिए थी, वो बॉल तो खेलनी ही थी। तो कृष्ण कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझसे बॉल गिरी है इसलिए मैं लेकर के आऊंगा। तो कृष्ण पेड़ पे चढ़ते हैं और टहनी से छलांग मार के उसमें जाते हैं, यमुना नदी में कूद जाते हैं। तो बहुत वहां पे जैसे ही वो जाकर के देखते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उनकी मुलाकात होती है नाग पत्नियों से। और वो उनको पूछते हैं कि मैया आपने मेरी गेंद कहीं देखी है क्या? तो जैसे ही वो उनको मैया बुलाते हैं, तो वो बड़ी इमोशनल हो जाती हैं, भावुक हो जाती हैं कि किसी ने हमको मैया बुलाया। तो फिर वो बोलती है कि हाँ हाँ शायद एक बॉल आई तो थी, और उनको दिखाती हैं, वहां पड़ी होती हैं। तो वो किसके पास रखी होती है? कालिया नाग के पास। अब कृष्ण वहां देखते हैं, जाने लगते हैं, तो कालिया नाग जोर से फुंकार मारते हैं। तो कृष्ण तो वैसे किसी चीज से डरते नहीं हैं, तो वो जाते जाते हैं आगे और ले लेते हैं। तो कालिया नाग उनको देने को तैयार ही नहीं होता। वो बोलता है कि अब जो इस नदी में आ गया वो सब मेरा है, ये कोई नहीं ले सकता। तो कृष्ण कहते हैं कि ये गेंद तो हमारी है, हम तो लेकर ही जाएंगे इसे। तो दोनों में बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है और फाइनली कृष्ण कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर अपन एक युद्ध कर लेते हैं, जो जीतेगा उसको मिलेगी। तो उन दोनों में एक युद्ध छिड़ जाता है और बहुत कालिया नाग बहुत पॉइजन छोड़ता है, बहुत जहर उगलता है, पर कृष्ण को कुछ नहीं होता। बहुत देर तक ऐसे करने के बाद जब कालिया नाग की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाती है, वो थक के हार जाता है, तो फिर वो समझ जाता है कि अब ये कोई साधारण बच्चा तो हो नहीं सकता जो मुझे इतना थका दे, जरूर कोई ना कोई ये है। तो वो उनको फिर भी कोशिश करते रहते हैं। इतनी देर में नाग पत्नी आती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि आपने हमें मैया बुलाया था, तो हमारी इतनी बात मानिए कि हमारे स्वामी को माफ कर दीजिए। तो उनके कृष्ण उनकी बात से उनसे मतलब प्रसन्न होते हैं, उनकी इतनी सहजता से बोलने से, और उनको बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं इनको छोड़ देता हूँ। तो कालिया नाग को भी रियलाइज हो जाता है कि कि ये कोई साधारण नहीं है, तो वो भी उनको प्रणाम करते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। तो कृष्ण उनसे बोलते हैं कि ठीक है, वो उनको क्षमा कर देते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों रहते हो, और यहाँ पे सब गांव के जो लोग हैं वो यहाँ का पानी पीते हैं, नहीं पी पाते हैं, क्यों यहाँ तुम रह रहे हो? तो फिर वो रीजन देते हैं कि जो गरुड़ देव हैं वो उनके डर से वो यहाँ रहते हैं, और गरुड़ देव को ऐसा श्राप मिला हुआ होता है कि वो वृंदावन में नहीं आ सकते, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो अपने परिवार के साथ उधर रहते हैं। तो फिर कालिया नाग बोलते हैं तो कृष्ण कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं इसका उपाय तुम्हारे लिए कर देता हूँ, फिर तुम्हें यहाँ पे फिर तुम्हें वहां पे जाकर कोई भय नहीं होगा। तो एक्चुअली में जो कालिया नाग का ओरिजिनल घर होता है वो होता है रमणक द्वीप पे। तो कृष्ण उन्हें वहीं जाने की आज्ञा देते हैं। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, ऐसा होगा कैसे? तो गरुड़ मतलब वल्चर्स, और वल्चर्स को स्नेक्स बहुत पसंद होते हैं, इसलिए उनको कालिया नाखून से डर होता है। तो फिर कृष्ण झट से उनके ऊपर कूदते हैं और उनके जो फण होते हैं, उनके जो हूड्स होते हैं, उस पे चढ़ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि अब तुम्हारे जो फण हैं उन पे हमारी चरण धूली है, तो जब अब गरुड़ तुमको देखेंगे तो तुम्हें खाने की जगह नतमस्तक होकर प्रणाम करेंगे हमारी चरण धूली को देख के, बिकॉज डस्ट ऑफ द लोटस ऑफ द लॉर्ड्स लोटस फीट को देखने के बाद तो गरुड़ उनके कैरियर हैं, तो उनके सेवक हैं, और जहां भगवान के चरण धूली उनको दिखेगी तो उनको प्रणाम ही करेंगे। तो फिर वो उनको छोड़ देते हैं। उससे दूसरी तरफ जो सारे ग्वाल बाल होते हैं, बहुत देर तक कृष्ण नहीं आए होते हैं, तो बड़ी घबराहट हो जाती है सबको कि कहाँ रह गए कृष्ण, अभी तक क्यों नहीं आए। तो जाकर के नंद, यशोदा और भी जो सारे गोपियां होती हैं, सबको इकट्ठा करके सब वहां आ जाते हैं कि कृष्ण कहाँ रह गए। सबको बड़ी चिंता होती है, क्योंकि जो वृंदावन के लोग होते हैं ना, अपने को सबको पता है कि कृष्ण भगवान है, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, बट वो वृंदावन वासी इस बात को नहीं मानते थे।
उनके लिए तो कृष्ण एक साधारण उनके बेटे, उनके सखा, उनके दोस्त, एकदम एक साधारण बालक थे। उनको उनकी उसी तरीके से चिंता होती थी जैसे अपने को अपने बच्चों की या अपने अपने को अपने बराबर फ्रेंड्स की या फिर अपने सबकी चिंता होती है ना, ऐसे चिंता करते थे वो कृष्ण। तो फिर उनको बड़ी चिंता होती है कि कृष्ण क्यों नहीं आए, और फिर थोड़ी ही देर में सब देखते हैं कि कृष्ण साक्षात कालिया नाग के फणों पे उनके सारे उनके सब नाग पत्नियों के साथ में ऊपर आते हैं और बहुत सुंदर नृत्य करते हैं। तो सब कृष्ण का जय जयकार करने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं देख करके कि फाइनली कृष्ण ने एक और चीज से जीत लिया, क्योंकि कृष्ण के इवन दो कृष्ण इतने चमत्कार करते थे, इतने चमत्कार करते थे और ऐसी ऐसी लीलाएं करते थे, तो भी वो लोग इनको ये लगता था कि क्योंकि कृष्ण इतना दूध माखन दही खाते हैं, यशोदा जी के हाथ का, गोपियों के हाथ का, इसके लिए उसमें इतनी पावर है। फिर वो लोग सब कृष्ण उठ करके आते हैं और उनको गरुड़देव को बोलते हैं कि अब तुम गरुड़देव क्या सॉरी कालिया नाग को बोलते हैं कि अब तुम वहां दोबारा चले जाओ और बिना भय के रमणक द्वीप पे रहो। तो अब हमारे सोचने की बात यह है कि किसी को पता है कि कृष्ण ने कालिया नाग को मारा क्यों नहीं? ऐसे हम उनसे सवाल कर सकते हैं। तो ज्यादा करके बच्चे माता जी पूछिए ना उनको, ये आपके सब स्टूडेंट्स ही है। हाँ, तो पूछिए। तो किसी को पता है कि भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को मारा क्यों नहीं और छोड़ ही क्यों दिया? इसका क्या रीजन है? आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हो जूम पे। हाँ, या कालिया नाग के प्रीवियस लाइफ के बारे में किसी को पता है? माता जी आपने अच्छा रिसर्च किया स्टोरी के बारे में। Any raised hand? So yeah, Tara. Yeah, Prabhuji, can you help? Like, या मोहन जोशी प्रभु, कैन यू अनम्यूट? हरे कृष्ण माता जी, क्योंकि ना उनकी पत्नियों ने ना उनको कृष्ण भगवान ने माँ बोला तो उनकी मतलब उनकी पत्नियों ने कहा कि आप इनको छोड़ दो, आप ये अब ऐसा नहीं करेंगे, तो कृष्ण भगवान की माँ की बात मानकर उनको छोड़ दो। यह एक कारण था, यह एक कारण था, और भी एक है। और कौन बता सकता है कि और क्या कारण है? प्रीति माता जी। हाँ प्रीति माता जी बताइए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। क्योंकि वो यमुना के माँ यमुना के गोद में थे, क्योंकि इसके कारण है, क्योंकि यमुना को कुछ त्रुटि ना हुई उसके वजह से नहीं किए थे। नहीं, पर उनका ओरिजिनल घर तो रमणक द्वीप पे था ना, वो तो वहां अपनी सुरक्षा के हिसाब से आ गए थे। मतलब यमुना उन्हें गोद लेती उससे पहले वो खुद आ गए थे वहां पे। और कोई कारण? In previous life, he was one of the asuras. Okay. Which he was cursed actually. Which I don't remember the name. In which he was cursed, so he represents enviousness. That's right. That's right. He was cursed. He was cursed because I don't remember the story very well. There is a story behind that he was cursed, so he is representing enviousness. And he was given the boon that he will be relieved when he Lord Krishna will be born. Will come in association with Krishna. So actually, he was a sage by the name of Vedashira. And one day, another sage came in his. So he used to live in a beautiful ashram. एक सुंदर आश्रम में वो रहते थे, और एक दूसरे ऋषि वहां आते हैं, अश्वशिरा नाम के, और उनका आदर सत्कार करने की जगह वो उनको बड़ा रूडली जवाब देते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, चले जाइए यहाँ से। तो वो जो दूसरे ऋषि होते हैं उनको बड़ा अपमानजनक लगता है कि कैसे ये ऋषि होकर के ऐसी बात कर सकते हैं, ऐसा बर्ताव तो, इतनी घृणा और इतना बुरा बर्ताव तो नागों जैसा व्यवहार कर रहे हैं ये तो। इसलिए वो उनको श्राप देते हैं कि आपको नाग योनि में जाना पड़ेगा। परंतु क्योंकि वो एक ऋषि होते हैं तो उन्होंने बहुत पायस डीड्स की होती हैं, अच्छे कर्म भी बहुत किए होते हैं, तो परंतु ये ऐसा बुरा बर्ताव करने की वजह से उनको श्राप मिलता है और उन्हें नाग योनि में आना पड़ता है। पर जब फिर उनकी नाग पत्नियां कहती हैं क्योंकि अब आपके सारे पाप
क्योंकि अब उनको कितनी बड़ी कृपा मिल जाती है ना, भगवान श्री कृष्ण की चरण धूलि जिसको मिल जाए उसको इससे बड़ी क्या कृपा चाहिए हो सकती है। तो फिर वो अपनी प्रेयर्स में ये बोलते हैं, प्रार्थनाओं में ये बोलती हैं कि इनके जो सारे पाप है ना वो अब खत्म हो चुके हैं, अब धुल चुके हैं, इसलिए अब इनको भगवान का एसोसिएशन मिलता है। और जैसे ही, और इसमें एडिशन ये है कि जब उनको भगवान का एसोसिएशन मिलता है तो उनके सारे पाप वहीं धुल जाते हैं और वो शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं और उन्हें भगवान की असीम कृपा मिलती है फिर। सो ये उनकी पास्ट लाइफ होती है कि वो एक ऋषि होते हैं, काफी पायस डीड्स की होती है, इसलिए उन्हें इतनी बड़ी मर्सी भी मिलती है भगवान की बाद में फिर। थैंक यू, कृष्ण भगवान की जय। So that's how I think, क्योंकि जो भी अगर अपन simple stories भी now for this age group ना we can add a little more in their stories, because already अपनी stories में इतनी linked up stories होती हैं, इतनी scriptures में इतनी depth है कि definitely कोई भी story भी अपन जो भी we are taking up, so we can always add more to their knowledge now by adding a few little more things. माता जी, आप सजेस्ट करते हो कि ये जो 6 to 8 years के बच्चे हैं उनको हम पिक्चर्स भी दिखाएं, स्लाइड शो दिखाएं, वीडियोस दिखाएं? Yeah, so what I would suggest is that videos and that उसमें क्या होगा कि शायद थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है और फिर वो उन अब जो उनको ध्यान से सुनने, तो एक जैसे पिक्चर अपन रख सकते हैं। एक्चुअली मैं शेयर करना भूल गई, सो वी कैन जस्ट कीप वन पिक्चर। मैं जैसे कालिया नाग है तो भगवान कृष्ण, एक अपन ने पिक्चर लगा करके रखा एंड देन वी कैन नरेट द स्टोरी। फिर क्या होता है कि मूविंग पिक्चर्स वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, फिर वो सुनने पे इतना फोकस नहीं करेंगे। So we can just keep one picture which will keep them connected क्योंकि we are doing this pastime, अपन ये वाला part कर रहे हैं, and then we can go ahead. So that's what I feel. Thank you. Any other questions? Any questions? Yeah. प्रश्न है माता जी के लिए? Thank you very much, Mata ji. It was last minute because some of our teachers felt you accepted our invitation. Thank you very much. I hope I was helpful. Thank you very much. As always, Mataji. Thank you. Hare Krishna. Thank you. So, अभी हम प्रोग्राम के अंत पे आ गए हैं। हमने देखा कि जो छोटे बच्चे होते उनका व्यवहार कैसा होता है। 4 और 6 साल के जो बच्चे हैं, जो 6 और 8 साल के बच्चे हैं, उनका क्या व्यवहार होता है। अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ हम क्लास में लेके आ सकते हैं। फिर हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी किया कि छोटे बच्चों को कहानी कैसे सुनानी चाहिए, श्लोका कैसे सिखाना चाहिए, एक्टिविटीज़ कैसे कराना चाहिए। ये सब हमने एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन किया। सीखने का सफ़र चलता रहेगा। वी विल कंटिन्यू डूइंग प्रोग्राम्स फॉर यू. If you want to be a part of this, please write to us. Please talk to Narsim Leela Prabhuji, and we have to collaborate and we have to work together. There are many resources, books available for teaching. जैसे शुभलास प्रभु जी जो रामायण पे पुस्तक लिखते थे, अभी उन्होंने बच्चों के लिए भी लिखना शुरू किया. सो वी हैव द इलस्ट्रेटेड रामायण, पंचतंत्र, अभी वो महाभारत पे भी लिखने वाले हैं बुक. देन हमारे गौरांग दर्शन प्रभु जी जो जी में रहते हैं, उन्होंने भी भागवतम पे बुक्स पब्लिश किया है. सो काफ़ी भक्त अभी बुक्स लिख रहे हैं. जैसे सेलिन माता जी ने एक पुस्तक लिखी है पोएम्स पे. सो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल राइटिंग बुक्स, शोइंग इंटरेस्ट. अभी ये प्रोग्राम में भी आप देखेंगे वी हैव मोर देन 100 पीपल. सो इससे मालूम पड़ रहा है कि लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज आवर होप एक्चुअली, बिकॉज चिल्ड्रन, बच्चे हमारा फ्यूचर है. in the temples, in the yatra, 15-20 साल के बाद our children are going to be there. And अगर हम अभी इस दिशा में काम करेंगे, then we will be able to see all that in the future. So thank you very much for joining us, and please give us your feedback. कैसा लगा आपको? How we can make it better? This is our prayer and our request, and thank you very much for being a part of this. Prabhuji, एक hand raised है. We can take one question.
Yeah, surely, please. Yeah, I'll ask to unmute Rupa Kishori Mataji. Mataji, you can unmute yourself. Yeah. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हमारे भक्त के बच्चे रहते और उनका एज ग्रुप है 5th से 10th तक, वो बच्चों को अब हम स्टोरी कौन से बताएं? उनको क्या होता है कि पहले से वो भक्ति में है, पापा मम्मी, तो उनको सब पता है, तो उनको उनके लिए स्टोरीज कौन से बताएं? 5th मतलब 11 साल के बच्चे, 11 साल के ऊपर, या इज दैट व्हाट यू सेइंग माता जी? मतलब 11 साल के ऊपर के बच्चे, राइट? हरि बोल। कैन यू अनम्यूट माता जी प्लीज? प्रभु जी, शी इज सेइंग कि 5 to 10 इयर्स के बच्चे जो होते हैं, जो ऑलरेडी डिवोटी फैमिली से होते हैं, 10th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड माता जी, 5वीं कक्षा के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, 5वीं से 10वीं तक के बच्चे, 5वीं से 10वीं तक के बच्चे। हाँ, सो ये एज ग्रुप हमने इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में कवर नहीं किया है। उसके लिए हम एक अलग प्रोग्राम रखेंगे, वे विल फोकस ऑन बड़े बच्चे। बड़े बच्चों को डिस्कशन अच्छा लगता है, चर्चा अच्छी लगती है, उनके पास प्रश्न होते हैं, उसका जवाब देना ज़रूरी होता है, उनके साथ मित्रता करना ज़रूरी होता है, उनके साथ खेलना ज़रूरी होता है, उनको इन्वॉल्व करना ज़रूरी होता है, उनकी बात सुनना ज़रूरी होती है। तो ये जो एज ग्रुप है ना, ये काफ़ी फ्रेजाइल एज ग्रुप हम मानते हैं, बिकॉज ये एज ग्रुप में डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी होते हैं। सो इस एज ग्रुप में वो चाहते हैं कि मेरे साथ कोई बड़ा अगर वक्त है मेरे जीवन में, तो वो मेरे जीवन में एक फ्रेंड, एक मित्र के जैसे भी रहना चाहिए, और एक गाइड के जैसा भी। तो मित्रता के द्वारा हम उनको समझा सकते हैं। तो पहले फिलोसोफर आएगा, फिर फिलॉसफी आएगी माता जी। अगर हम पहले फिलॉसफी सुनाएंगे, उनको समझाएंगे, तो बच्चा हाथ से चला जाएगा। सो मित्रता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस एज। तो एज पेरेंट्स ऑल्सो वी हैव टू बिकम फ्रेंडली, नॉट फ्रेंड्स बट उनके साथ फ्रेंडली होना ज़रूरी है। उनको जो दिलचस्पी लगती है उस पर भी बात करना ज़रूरी है। उनके कंसर्न्स को समझना ज़रूरी है। जैसे एक दोस्त जैसा एक दोस्त दूसरे दोस्त की बात कितनी अच्छी तरह से समझता है, तो वो ज़रूरी है। सो बट इस पे हम एक प्रोग्राम करने वाले हैं, बिकॉज ये एज ग्रुप जिस तरीके से हम उनके साथ मतलब कैसे सिखा सकते हैं, उस पे हम डेफिनेटली एक प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू। So we will end, yeah? Any more questions? Yeah? नहीं प्रभु जी, कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आपके क्लास के अंदर हमें सबको स्टूडेंट बनते हुए बहुत ही मजा आया। एक अनोखा एक्सपीरियंस था और इससे सब लोग सहमत हो गए, और हम आगे जाके ऐसे ही सेशंस आपसे सुनने के लिए उत्सुक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। Hare Krishna, thank you very much for joining.